Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So, were you aware about the history which went with the Kashmiri Pandits and the people of Kashmir? No. Sorry, I didn't know anything about Kashmiri Pandits and Kashmir. Do you have any friends, relatives, or someone who can be closely related to Kashmiri Pandits? No. Find the truth. This film is not against any party, any community. सब देखेंगे, निश्चित है कि सब देखेंगे, सब देखेंगे, सब देखेंगे, सब देख रहे हैं और सब देखते ही रह गए। उस काबिले तारीफ फिल्म को उस बखूबी से निभाए गए सारे किरदारों को सब देखेंगे। Today I have with me someone who is not only a wonderfully talented actor but also who is very brave and gutsy for the role he has done in Kashmir Files. Joining me in conversation today is Krishna Pandit aka Darshan Kumaar on India Forums. Hi Darshan, welcome to India Forums. Hello, thanks for having me. Well, as I said in the introduction, you are brave and gutsy for the role which you have chose, and I mean it, because I went to see the film with my mother and my grandmother, and today I told her कि I'm going for a Kashmir Files interview. She's like, who? I said the hero of Kashmir Files. She's like, oh, that guy, Krishna. Yeah. That's how people are knowing you these days. How does it feel? It's amazing. I'm on 9th cloud right now because this film has turned out to be audience film. Now they themselves are promoting it and talking about this film, supporting it. So it's a great feeling, and especially they are loving Krishna Pandit characters. Right now there is a one thing trending right now, and that's like Krishna Pandit is like Krishna, who was listening different narratives like from Kauravas and Pandavas, and especially in the monologue, he says the truth. And do you know who's the Arjuna? The audience. Yeah. So when you get this kind of response and love, so my heart, you can say, filled with gratitude. Also, Darshan, while when the script came to you, how easy or difficult was it for you to decide कि मुझे ये role करना है या नहीं करना? What was the thought process which went behind deciding? The main reason to sign this film was that it's a true story about a horrible incident that happened in 1990, and hardly few people knew about it. When I met Pallavi ji and Vivek ji, they showed me the videos of the real victims. It shook me inside out. I couldn't utter a word after watching those videos. And later, during the meeting with Vivek sir, he gave me the script of the film. And while reading the script, I could imagine and feel the same pain and suffering which I had seen on those videos. Because Vivek sir depicted all those incidents so aptly in its screenplay and dialogues, I was spellbound, and I thought, I'm going to do this film. So people should know the truth, and that's why I did the film. Perfect. But for example, youths like me also, we were not aware about this gruesomeness which happened back in 1990. So were you aware about the history which went with the Kashmiri Pandits and the people of Kashmir? Oh. Sorry, I didn't know anything about Kashmiri Pandits and Kashmir, what happened in 1990, and I'm feeling ashamed while saying this because the audience now, they are उनको अब समझ में आ रहा है, तो that's what happened with me also, because while reading the script I got to know each and everything, and I'm glad I became their voice and I could do a little bit for them. Yeah. Also, we are glad that we got to know the reality which happened, because school में ना history textbook में ये सब नहीं होता है. And also, if you go to see on internet, there are a lot of things which will kind of mislead you sometimes. So this was the best part of the film, that youths, teenagers, and also not only youths but also people who are senior citizens were unaware about this. As I said about my granny, she told that, "Arey baapre, this is something which we did not know," and we are very thankful as an audience that you were part of such a brilliant film. Before the film was announced, there was a lot of flack by the audiences. बहुत कुछ चल रहा था फिल्म के आजू बाजू. People did not want this film to go on screen. So तब क्या emotions थे आपके कि यार ये फिल्म इतनी मेहनत से बनी है, तो how did you feel at that time? Yeah, because this is a brutally honest film, and
I thought I would like to say to the audience, yeah, who is opposing this, I'll say like you should watch the film first, because whatever we are showing, it's in public domain, and you, we live in a democratic country. You can, and we all have rights to speak. have our own Yeah, opinions as well. And I believe that once you'll see the film, then you'll get to know that this film is not against any party, Right. any community. This film is against terrorism. Exactly. And we always talk about humanity, justice. This film shows if what actual pain is there when the inhumanity causes. So this is a brutally honest film, and they should watch this and then judge the film. Definitely. And after seeing Kashmir Files, there is this one line which we can quote, that justice delayed is justice denied. So how much do you agree to this? Very much, because कश्मीरी पंडितों को 32 साल हो गए हैं ये अपनी आवाज़ उठाते हुए, और कोई सुनने को तैयार नहीं था. और मैं प्राउड फील करता हूँ और इमोशनल भी हो जाता हूँ कि मैं उनकी आवाज़ बन पाया, मैं उनके दर्द को लोगों के सामने ला पाया, और आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड उनके साथ जुड़ गया है और चाहता है कि उनको इंसाफ मिले. तो ये एक खुशी की बात होती है, क्योंकि अगर आप देखें ये एक इंसान की कहानी नहीं है. अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें तो मैंने एक फिल्म की थी सरबजीत, वहाँ हमने एक इंसान की बात की थी कि उसके साथ कैसे ज्यादती हुई, इमोशनली भी, मेंटली भी, और कैसे वो वापस नहीं आ पाए. तो मैंने उसमें पाकिस्तानी लॉयर का कैरेक्टर प्ले किया था, जो अपनी फैमिली की और जान खतरे में डालकर, खुद को खतरे में डालकर उसकी सरबजीत को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको आउट ऑफ इंडिया ही शिफ्ट होना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ. तो वहाँ हम एक इंसान की बात करें, यहाँ 5 लाख लोगों की बात है जो आज तक 32 साल से इंसाफ मांग रहे हैं और नहीं मिला है. तो मुझे अच्छा लगता है कि अब सब लोग जुड़ रहे हैं, उनके संघर्ष में साथ हो रहे हैं, तो आई थिंक उनको इंसाफ जरूर मिलेगा. The best part of your character was, of course, the monologue. We are coming to that. But the best part of that, movie के start में आप जैसे unaware होते हो about सच में क्या हुआ था. And when you go in the college, सब नारे लगा रहे आज़ादी के. Krishna is confused कि ये क्या हो रहा है. So were the audiences अब तक, And then comes the monologue. तो वो monologue के लिए क्या खास तैयारी हुई थी? The 13-page monologue was one of the most important and challenging scene for me as an actor. When I read first time, I was so excited and nervous also about that particular scene, because the monologue is beautifully written, which has lots of historical references. So I wanted to convince myself first, before convincing audience. Right. So I studied all the historical references. Wow. Yeah, whichever was available in public domain. And since it was a lengthy scene, so Vivek ji, our director, he was very kind. He said he would shoot that scene in patches and in period of 2 days. So no need to worry about that. But I was worried about breaking the flow, because I wanted to speak from my heart. So it should reaches to the heart of the audience. Yeah, so that's what I did, and I'm glad and I'm happy that I could deliver that amazing monologue in one take. Was the witness that after the monologue there were cheers, there were claps, there were tears in the theatres. Yeah. So I want to convey you that I was the witness to that, and that is how beautifully you have reached to our hearts. Thank you so much. Thank you. Also, I want to ask you, do you have any friends, relatives, or someone who can be closely related to Kashmiri Pandits, or someone you know who is or was a Kashmiri Pandit like you? No, इस फिल्म से पहले ना ही मैं किसी से मिला और ना ही मुझे ज़्यादा पता था. फिल्म के बाद मैं कह सकता हूँ कि अनुपम खेर सर, वो मेरे बहुत क्लोज हो गए हैं. वो एक, अगर आप देखेंगे तो टीनेजर की तरह हैं. वो हर रोज़ कॉल करते हैं, और जो कुछ हमारी जो इंडस्ट्री में चल रहा है या फिर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं वो शेयर करते हैं. वो बहुत एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर. तो मैं अब उनको पर्सनली जानता हूँ. और भाषा, जो मैं वैसे फिल्म में वैसे नहीं मिल पाते, लेकिन वो मेरी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है. बहुत यंग है वो, पर वो मेरे बचपन के कैरेक्टर का माँ प्ले कर रही है. उन्होंने बहुत कमाल काम किया, तब उनको मैं जानता हूँ. अदरवाइज मैं इससे पहले ज़्यादातर लोग किसी को नहीं जानता था. जानता था तो कभी हमें उनके बारे में पता नहीं था कि ये वहाँ से बिलोंग करते हैं. तो कृष्णा पंडित के कैरेक्टर ने आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा है?
It has changed me a lot. The film has changed me from within, and it's like, we always talk about just like I said, humanity and justice, Yes, yes. and our film shows like when there's no humanity, what happens then? And I believe we should enlighten ourselves Right. and find the truth Right. and spread love all, so Right. this world become a better place to live in. So that's what I believe after this film. And also, Darshan, do you realize that आपने एक bar set कर लिया for your own self? Now people are going to expect a lot from you. Yeah. So how does I mean कैसी तैयारी चल रही है for that? एक्चुअली मेरी पहली फिल्म से ही धीरे धीरे ये मैरी कॉम से ही लोगों को काम मेरा पसंद आ रहा था. और मुझे अच्छा लगता है ये, मुझे लगता है कि ऑडियंस मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रही है और वो चाहते हैं कि मैं और बेटर काम करूं, और मेरी कोशिश भी वही रहती है. अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूं कि डिफरेंट तरीके की फिल्में करूं. एक बंधन में या एक तरह की फिल्में बनना नहीं चाहता मैं. सो मेरा मेन मोटिव वही है, और मैं चाहूँगा कि अब इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग रोल मुझे कुछ मिले जिसमें मैं अपनी हार्ट एंड सोल डाल सकूं और बेटर परफॉर्मेंस दे सकूं और लोगों को फिर से सरप्राइज कर सकूं. हम सरप्राइज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू कीप यू बिजी नेक्स्ट आफ्टर कश्मीर फाइल्स. अभी मैंने 2 फिल्में मतलब आश्रम की शूट कंप्लीट हो गई है, और मेरी नेक्स्ट फिल्म टी सीरीज के साथ मैंने की है. इट्स अ लीड विद माधवन की कुकी गुलाटी ने डायरेक्ट की है. वो थ्रिलर फिल्म है, बहुत ही एज ऑफ योर सीट थ्रिलर है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए. तो वो जल्दी रिलीज होने वाली है. उसके अलावा अभी मैं इससे पहले मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मेरे लिए कितना कुछ बदल गया है या अभी आगे में क्या होने वाला है. कि सब बड़े बड़े ए लिस्टेड डायरेक्टर्स मुझे अपनी फिल्मों में एज अ लीड कास्ट करना चाहते थे. उनके पास कुछ चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स थे जो वो कहते थे कि दर्शन तुम ही बेस्ट प्ले कर सकते हो. सो कमाल था, लेकिन प्रोड्यूसर्स को कुछ नंबर्स चाहिए थे बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि बॉक्स ऑफिस नंबर भी जरूरी है. तो अभी एज अ लीड मेरे बॉक्स ऑफिस तो यहाँ तो धमाका हो गया है. सो अभी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई हैं. अभी जिसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी उनके तो स्क्रिप्ट्स आ ही गई हैं. और उसके अलावा भी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मीटिंग के लिए बुला. सो मैं कोशिश करूंगा अच्छा सब्जेक्ट चूज करने की. Well, thank you so much, Darshan, for talking to India Forums. It was amazing talking to you. Well, guys, this was Darshan Kumar for all of us. And if you haven't seen Kashmir Files yet, then what are you waiting for? Go and watch Kashmir Files and pour in all your love for these wonderful guys. Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.